निगमकल्पतरुगलितं फलां निगमकल्पतरुगलितं फलां सुखमुखादमृतद्दवसान्युतां सुखमुखादमृतद्दवसान्युतां पिबत भागवतं रसमालयां पिबत भागवतं रसमालयां मुहुरहो रसिका भुवि भावुकां मुहुरहो रसिका भुवि भावुकां पिबत भागवतं रसमालयां। नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। श्रोताओं, आज का विषय महाशिवरात्रि। दर्शकगण, महाशिवरात्रि हर महीने में एक शिवरात्रि आता है और फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहा जाता है। इससे पहले सबसे प्रथम मंदिर परिषद की ओर से और मैं अपनी ओर से हमारे श्रद्धेय पंडित सुरेश राम गुलाम जी के निधन में हम उसके श्रद्धांजलि एवं उनके परिवार को सहानुभूति प्रकट करते हैं। हमारे श्रद्धेय पंडित जी ब्राह्मण महासभा के प्रधान जी थे, सनातन धर्म मंदिर परिषद के मुख्य वक्ता थे, अखिल ब्राह्मण मंडल के सदस्य थे। उन्होंने धर्म के लिए और मानव समाज के लिए उन्होंने बहुत सेवा की, अपना योगदान प्रदान किया। यहाँ तक कि पंडितों को अध्ययन करने के लिए गुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में हमेशा समाज का सेवा, मनुष्य सेवा, हिंदू समाज का सेवा और साथ साथ में मानव सेवा भी उन्होंने बहुत सुंदर से निभाया। इसलिए उसके आत्मा को मोक्ष प्रदान करने के लिए हम सब लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं। अनाधिनिघ्नतो देव शंख चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेतमुक्ष वरदो भव प्रेतमुक्ष वरदो भव। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका द्वारावती शैव सप्तदा मोक्षदायिका सप्तदा मोक्षदायिका। नारायणां सुरश्रेष्ठां लक्ष्मीकान्तं वरप्रद अनेन तर्पणेनार्थं पितरमोक्ष वरदो भव पितरमोक्ष वरदो भव। आत्मा स्वर्गति प्राप्त हो, ऐसा परिषद की ओर से मैं अपनी ओर से संवेदना करते हुए प्रार्थना करते हैं भगवान को। दर्शकगण, महाशिवरात्रि एक साल में 12 महीने होते हैं और हर एक मास में एक शिवरात्रि, जिसे हम मासिक शिवरात्रि करते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि मनाने के लिए शिवरात्रि व्रत किया जाता है और व्रत बहुत बड़ा अर्थात होता है। एक दिन नहीं, 15 दिन नहीं, बल्कि एक मास से सभी लोग तैयारी करने लगते हैं, जिसमें आप सब लोग जानते हैं कांवर। कांवर कैसा होनी चाहिए, कांवर का महत्व क्या होता है, त्याग किसे कहते हैं, व्रत का अर्थात कैसे होना चाहिए, और ये सब कुछ आज हम प्रयत्न करेंगे कि कुछ झलकियां इसमें प्रस्तुत किया जाए। सबसे पहले हम लोगों का लक्ष्य क्या है, महाशिवरात्रि। शिवरात्रि शिव के रात्रि का महत्व होता है और महाशिवरात्रि जो कि 18 तारीख को है। इससे पहले हम सब लोग व्रती बनते हैं। व्रती का मतलब होता है संयम, नियम, धर्म, डिसिप्लिन होना चाहिए। और कांवर का अर्थात क्या होता है, जो कांधे में लेकर जाया जाए, जो आपके शक्ति अनुकूल। पहिया में कांवर लेकर नहीं जाते हैं। इस प्रकार से कांवर का एक भी नियम होता है, सारा कुछ का एक संयम होता है, एक नियम होता है, और जिस चीज को संयम और नियम से किया जाए उसका फल प्राप्त होता है।
जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, हर एक्शन के बाद एक रिएक्शन होता है। अगर आप अच्छा चाहते हैं तो अच्छा कर्म करना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए। व्रत ये नहीं कहता कि सिर्फ आप नहीं खाते हैं तो व्रत हो जाता है। व्रत का तो एक नियम होता है सद्भावना। व्रत का नियम कहा जाता है प्रेम, एक दूसरे से प्रेम रखना, किसी को तकलीफ न देना। अगर आप सब लोग व्रती बनना चाहते हैं तो सबसे पहला संयम, नियम, धर्म, श्रद्धा, भक्ति, भावना, इन सब चीजों को अपने शरीर में लाना चाहिए, अपने जीवन में लाना चाहिए। अगर हम सब लोग शिवरात्रि 18 तारीख को मनाते हैं तो एक सप्ताह पहले से ही घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ करके क्या करते हैं? यात्रा। अब यात्रा में पग से चला जाता है, चल करके जाते हैं, इसे पद यात्रा कहते हैं। पद यात्रा का भी नियम होता है। मैं जानता हूं समय ऐसा है, दूर दूर से निकल करके आते हैं। पद यात्रा में कहा जाता है कि न चप्पल पहनो, न जूता पहनो, नंगे पांव जाया जाता है। अगर मनुष्य ये कर भी नहीं सकता, लेकिन घर से निकलने से पहले क्या किया जाता है? पहले अपने आप को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को बस में रख दिया जाता है, क्योंकि आप एक महीने पहले से ही अपने घर में कांवर बनाने लगते हैं। कांवर जब बनाते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि किस चीज के लिए? शिवरात्रि। और शिवरात्रि शिव के तपस्या, शिव के त्याग, शिव के भक्ति, शिव के भावना के साथ ये किया जाता है। तो पहली चीज ये ध्यान में रखें कि कांवर कैसी होनी चाहिए। कांवर ऐसी बनाना चाहिए जो कांधे में लेकर के जा सकते हैं। कांवर वो बड़ा नहीं होना चाहिए जिसे आप पहिए में लेकर के जाते हैं, जिसके दूसरे के प्रति आपको कष्ट होता है। अगर आप व्रती है तो आपका संयम ये कहता है कि आपके पूजा से, आपके चलने से, आपके आधार से किसी और को कष्ट न हो। जब आप किसी और को कष्ट नहीं देते हैं, प्रेम भावना से अपना कर्म को करते हैं, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा किस भावना से किया जाता है? पूजा करने का लक्ष्य क्या होता है? व्रत करने का लक्ष्य क्या होता है? क्योंकि जिसमें प्रेम, फिर श्रद्धा होनी चाहिए, फिर उसके बाद भक्ति आता है। प्रेम, श्रद्धा, भक्ति। भक्ति के बाद जो भी कुछ हम लोग करते हैं एक ही लक्ष्य होता है, जिसे हम मुक्ति कहते हैं। प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और मुक्ति। और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हम सब लोग प्रेमी बनते हैं, हम सब लोग व्रती बनते हैं, हम सब लोग अपना कर्म करते हैं और अपना उत्तम कर्म करके ही तब जाकर के शिवरात्रि का पूजन करते हैं। और शिवरात्रि का पूजन महत्व विशेष कहा गया है। जो लोग पद यात्रा नहीं कर सकते तो बस में जाते हैं, जो लोग चल करके नहीं जाते तो वाहन में जाते हैं। लेकिन वाहन में जाते समय बहुत सुंदर से कहा गया कि अगर जितने लोग कांधे में कांवर लेकर के अपने घर से निकलते हैं यात्रा के लिए, परी तालाब जाने के लिए, तो सबसे पहला पूजा अपने गांव के मंदिर में, सबसे पहला पूजन अपने गांव के मंदिर में जाकर के प्रदक्षिणा करके शिव पूजन करने के बाद ही कांधे में कांवर लेकर के आप सब लोगों का यात्रा प्रारंभ होगा। और यात्रा करते हुए ध्यान रखें कि व्रती है। व्रती का मतलब होता है संयम, नियम और खाना पीना में भी वर्जित होता है। ऐसे तो व्रत में खाना पीना नहीं होता, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, फलहार हो सकता है। आप अगर कुछ जल पान कर लेते हैं, अगर आप कुछ फल ग्रहण कर लेते हैं तो वही संयम हो जाता है। और जिस समय भी आप सब लोगों को भूख लगा है, आप फलहार ग्रहण करना चाहते हैं, जल पान करना चाहते हैं, तो कांवर को एक सुरक्षित जगह पर रख करके फिर अपना जल पान करने के बाद ही हाथ मुख धो करके फिर कांवर को लेकर के चलने लगते हैं। जब हम सब लोग परी तालाब की ओर बढ़ते हैं और वहां पर सबसे पहला पूजन गंगा पूजन कहा गया है, क्योंकि जिस उद्देश्य से आप घर से निकले हैं वो उद्देश्य कोई और नहीं बल्कि गंगा को लाने के लिए। जिस गंगा को लाने के लिए आप लोग घर से निकले हैं, उसको लाना कैसा चाहिए, किस प्रकार से, किस चीज में लाना चाहिए? तो एक ऐसा पात्र हो जा है जिसे हम कमंडल कहते हैं।
ऐसा नहीं कि हम सब लोग बहुत इस पात्र में, कोई सोपिन ले लेता है, कोई अनेक अनेक पात्र में लेकर के नहीं। गंगा जल को कमंडल में लेने से, सुरक्षित एक ऐसा पात्र में लेने से, जिससे हम उस जल को लेकर के भगवान शिवलिंग पर चढ़ा सके। शिवरात्रि का महत्व यही होता है कि आप शिव का आराधना करें। शिवरात्रि विशेष करके फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को क्यों मनाया जाता है कि उस रात्रि में शिवलिंग का उत्पत्ति, शिव पुराण में बहुत बड़ा महत्व बताया गया, अनेक महत्व का उच्चारण है, लेकिन हम सब लोग दो विशेष महत्व को लेकर के हमेशा अपने जीवन में आधार बना करके शिव जी का पूजन करते हैं। पहला, क्योंकि उस रात्रि में शिवलिंग का उत्पत्ति हुआ, और दूसरा कारण यह रहा कि उस रात्रि में शिव विवाह का चरित्र बताया गया, इसलिए शिव पूजा सर्वोत्तम पूजा बताया गया। अगर आप सब लोग जाते समय सबसे बड़ा चिंतन अगर भगवान का नमन करें, पंचाक्षर श्लोक, एक पंचाक्षर श्लोक कहा गया, जिसे श्लोक के आधार से कहते हैं, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अगर इन मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते तो कृपा करके 5 जो अक्षर वाला भगवान शिव का नाम है वही आप सब लोग उच्चारण करते हुए अपना यात्रा को सुंदर बनाने की कृपा करें, जिसे कहते हैं ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार से मैं यही कामना करूं सभी लोगों को, व्रती को, कि अपना व्रत परिपूर्ण रूप से श्रद्धा से, भक्ति से उसको लेकर के अपना करें, और गंगा जल लेकर के फिर पुनः पात्र अपने गांव में आए, अपने मंदिर में। और याद रखना, जब जल लेकर के आते हैं, जब तक शिवरात्रि के रात्रि नहीं गुजर जाते, आप लोग घर पे नहीं जा करके सोना चाहिए। मंदिर में आकर के मंदिर का प्रदक्षिणा करें, व्रत करें, उस रात्रि का जागरण करें। शिवरात्रि का महत्व है, जिस रात्रि में 18 तारीख के रात्रि में जागरण करके आप सभी लोग शिव जी का पूजन करें, जल अर्पण करें, अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव जी का पूजन करते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इति शांति शुभम। मुरुगा 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 आरुमुग मारुमुग 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 आरुमुग मारुमुगम என்று பூதி Madame, Monsieur, bonsoir. Vanakkam. Merci de vous brancher sur les chaînes de la MBC pour suivre ce plateau spécial à l'occasion du Thaipusam Kavadi. C'est au son de la cloche et la cérémonie du Kodiyetram que les Tamouls de l'île Maurice ont démarré le jeûne en vue du Thaipusam Kavadi qui sera célébré le samedi 4 février. Bien sûr, la MBC, nous aujourd'hui, nous avons réuni un panel d'invités pour parler justement de la fête du Thaipusam Kavadi. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui le Swami Devakumar, donc prêtre officiant au Ammatuke Tirukkovil Kandiab. Swami Vanakkam. Également donc sur ce plateau, Amma Selvi Ramasormi, prof de Tamoul. Vanakkam. Vanakkam. Et aussi le plaisir aujourd'hui d'avoir parmi nous Anne Stephen Narayana Pillai, le Vice Chairperson du Tamil Speaking Union. Vanakkam. Vanakkam.
Alors, donc, comme on disait aujourd'hui, nous parlons de surtout l'aspect qui tourne autour du Taipusam Kavadi, mais également le dieu Muruga. Muruga Peruman, comme on appelle lui. Donc, nous pouvons un peu sa naissance, nous pouvons le pourquoi du Taipusam Kavadi. Et là, pour tout de suite, me tourne-moi vers le Swami Devakumar. Swami, quand nous dit Taipusam Kavadi, qui ça veut dire Taipusam Kavadi? Et merci pour MBC avec MTTF qui lui donne sa chance pour partager l'expérience de Muruga Peruman à l'occasion Taipusam Kavadi. Comme nous dit Taipusam Kavadi, et Muruga la prière, c'est sa prière, il y a plusieurs, il y a beaucoup nous Puranam, il expliqué. Et il y a Kavadi, Sitere Kavadi, il y a Taipusam Kavadi, il y a Panguni Utiram Kavadi, et aussi il y a Kanda Sashti, Vaigasi Visagam, c'est plusieurs, un grand manapouye qui y a pour faire Muruga. Quand nous pensons Taipusam, c'est nous dans Tamil, dans mois, il y a 12 mois, nous connaissons Sitere, Vaigasi, Ani, Adi, Avani, Puratasi, Aipasi, Kartigay, Margari, Tai et Masi, Panguni. Alors, les 10e mois et dans mois 12 mois dans Tamil. Donc, calendrier Tamil. Donc, calendrier Tamil. Dans Thai Madam, il y a un grand mois, dans Tamil Nadu même, de Thai Madam, il donne beaucoup de prospérité pour tout le monde. Mais de toute façon, les vignes agricoles et ils font une plantation, c'est Thai Madam qui fait harvest. Alors, amène ça jury là, amène ça jury, pour nourrir avec beaucoup de monde à travers ça. Mais Thai Madam, il y a un grand mois, un grand Madam dans Tamil. Le Pusa Nakshatram dans Thai Madam, c'est une grande célébration pour Muruga. Pusa Nakshatram, et nous avons 27 Nakshatram, et il commence à Ashwini, Bharani, les poils comme ça, les 27 Nakshatram. Dans un Nakshatram qui s'appelle Pusam. Pusam, c'est l'étoile. Pusam, c'est l'étoile. D'accord. C'est Nakshatram. C'est Pusam, Sazu, et aussi dans Tidi, nous calculons, nous avons Pradamai, Dudiye, c'est comme ça, premier Zulaline, ou deuxième Zulaline, et comme ça, il vient, et 15th day of Zulaline, c'est full moon. Et si nous disons Paurnami. Il est associé avec Paurnami, et Pusam, Nakshatram, et aussi moi dans Thai. C'est une grande célébration pour Muruga. D'accord. En fait, Thai Madam et Tamil Nadu, il y a plusieurs villes célébrées pour Muruga et aussi beaucoup de villes et les Kavadi. D'accord. Alors, Zodi, quand nous guettons la communauté tamoule à travers le monde, qui n'est pas éparpillée un peu partout, non seulement dans l'Inde, donc nous cause l'histoire, 6000 ans de cela, Zodi, la communauté tamoule n'est pas éparpillée à travers le monde et partout, nous trouvons célébrer le Taipusam Kavadi. Je prends par exemple ici même à Maurice, dans Singapour, dans Malaisie, dans l'Australie, dans le Canada, dans l'Angleterre, tous ces pays-là, donc la grande communauté tamoule, les célébrer le Taipusam Kavadi. Nous cause du carême, le carême du Taipusam Kavadi à Masselvi. Donc, c'est un carême très strict, c'est un carême que nous bisons tous nous vers dévotion. Donc, comment ça carême-là l'y passer? Vanakkam, pour donner-moi l'occasion pour être sur ce plateau. Et là, ça carême-là, comment vous pouvez dire, il y a un carême très, très important pour tout Tamil à travers le monde et tout le Tamil people à travers le monde, que nous célébrons le Taipusam Kavadi, pas dès maintenant, mais de 5000 ans avant, même dans le Tolkapiam, il mentionné que Benjamin, tu peux prier le dieu Muruga et Muruga Kadavul. Et dans beaucoup de littérature, il mentionnait le Murugan avec le Sevar Kodi et le Mayil Vaganam et le Veil comme Ayudam de Sulame. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons sa croyance-là, que 5000 ans après, nous avons la même envergure qui diminue à travers le monde, puis encore célébrer le Taipusam Kavadi. Et même à Maurice, nous trouvons à un niveau extraordinaire
tout le long de sa 10 jours-là, Dimon convergé vers Ban Murugan Coville. Ben, la prière est Les de plus en plus intense. plus intense et je garde le jeune et de petit au vieux. Ça veut dire de tout âge, même les enfants de l'école, je connais le carême et même les grands. Ça fait une différence comme si et ça fait une beauté aussi de la communauté de Tamil, quoi. Comment dire, il montre nous qu'il y a encore vivant de croyance en Dieu, Kadavul, Tamil Kadavul Murugan. D'accord. Alors, Steven, donc, le vice-chairperson du Tamil Speaking Union également, qui est avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Le jour du Thaipusam Kavadi, Ban Devo, levé bonnet à grand matin. Après, comment se procéder pour la journée? முதலில் அனைவருக்கும் வணக்கம் முஜாசுத்து வணக்கம் et merci à la MTTF et à la MBC pour donner l'occasion pour venir causer un petit peu le Thaipusam Kavadi. Le jour de Kavadi, c'est au fait, il n'a pas commencé avec le jour de Kavadi, il commençait plus avec la veille. Que il y a tout l'aspect préparatif. Tout ban bakten, je retrouve avec toute bonne préparation pour le Kavadi. Je passe une nuit pour arranger le Kavadi. Je reste préparé et il y a beaucoup de personnes qui même, je pas dormi, je passe une nuit là et c'est une ambiance extraordinaire. Et même le jour de Kavadi, le matin, comme on connaît, tout le monde, nous, je t'ai Coville. Et il y a la plupart de les Coville qui trouvent à travers l'île Maurice. Nous faisons par l'Abhishegam tout le matin. Alors, tout le monde bakten, je t'ai Coville, je fais par l'Abhishegam. Et par la suite, nous trouvons tout qui est vers la rivière, à Tchankare. Je t'ai la rivière. Et là-bas, nous avons beaucoup de systèmes qui nous font. Bandimoun que je même prend un bain dans la rivière. Un bain sacré. Il y a un bain sacré. Et par la suite, nous avons aussi les autres variétés, les autres la prière qui nous fait pour les veille, nous fait veille oui. Et aussi tout les bactères qui nous amènent les aiguilles, nous fait des variétés pour tout ça. Et nous fait la prière aussi pour les Kavadi, tout ce qui peut les parler Kudam. Et aussi, le jour de Kavadi, nous tenons le son de Avinasi Pate, Armuga Swami Virutam, partout à travers l'île, qui montrait qui pas qui résonnait, qui montrait sa l'amour, qui montrait sa bhakti, qui ban pour le Dieu Muruga, n'est-ce pas? Il montrait sa bhakti, la foi qui ban tamiren et aussi Asté nous remarquons qu'à l'île Maurice, nous n'avons pas juste ban tamiren, nous avons tout, c'est montrer l'unité nationale. Il y a une célébration nationale. D'accord. Alors, Swami Devakumar, donc nous pouvons écouter à Marcelvi causer, à Steven causer, donc tout peut cause le bhakti, la dévotion, Bantamul et le Dieu Muruga Peruman, quand nous cause de bhakti, et a vraiment une force extraordinaire, n'est-ce pas? Il est bien important comment nous cause bhakti. Bhakti, ça veut dire une dévotion, un anbu, comment nous montrer nos anbu avec Muruga. Et en tamil, nous avons une phrase, nous disons, jamais nous disons juste bhakti tout seul. Nous disons baya bhakti. Bayam, ça veut dire un fear. Une fear et un paix. Qui veut dire que nous besoin de payer bon Dieu. Et ben grand du monde nous montre nous dans sa façon là. Peut-être ben grand tata, c'est grand ben amai apai. Et donc quand nous causons dans Tamil dans ça, je veux dire Baya Bhakti. Nous à Coville, nous faisons la prière et Baya Bhakti. Nous comprenons Bayam, ça veut dire un free, un paix. Qui fait les besoins, sa bhakti tout seul, il n'est pas pour Djibouti. Ce qui moi trouvé, moi remarqué, peut-être les bhakti ou besoin faire ensemble avec un paix. Qui fait une paix, sa paix à la même, il donne ça
vrai bhakti. Mhm. Par exemple, nous pouvons conjurer l'auto, nous avons certain rules and regulations how to follow on the road. Mhm. Si vous pas à suivre, ça veut dire ça respect. Ça paye ou paye, ou pour gagner une bonne pénitence à travers la loi. Mhm. C'est nous pour qui ça fait qui nous peut amener nous dans la bonne direction, c'est fear, Respect. c'est respect. Mhm. Ce respect-là, nous sommes capables de dire ça respect-là, nous sommes capables de dire respect et prophétie. D'accord. C'est un respect. Mhm. Sans respect avec papa, maman, Avec nos gourous. avec nos gourous. Mhm. Ça respect avec bon Dieu. Mais toutes les affaires qui parlent de respect, puis respect, comme on dit, on peut analyser, c'est respect, c'est un paix. D'accord. Ça, au paix, Mhm. il est difficile nous pour dire nous juste bhakti. Donc, tous les deux, ils aiment ensemble. Tous les deux, les besoins ensemble. D'accord. Parce que l'automne nous dit, dans chaque vendredi, ou chaque taïpousam, un grand carême, un festival, nous dit obligé nous besoin rester carême. Mhm. Et obligatoire, ben grand du monde, nous mettons dans la tête. Mais nous aujourd'hui, nous réalisons, nous pouvons connaître qui fait ça, qui fait ça, qui fait nous besoin faire ça, qui fait nous besoin faire ça. Les bien sûr, nous besoin connaître. Mais seulement, il y a beaucoup de choses qui nous cachent, beaucoup de raisons, comme on dit, une cachette à travers certains mots, certains words, qui nous besoin suivre. D'accord. Si nous parlons, comme on dit, vérifier là-dedans, mais nous ne sommes pas capables de voir ça bhakti là bien. D'accord. Ça veut dire que nous devons concentrer en tel taïpousam qui avait dit vini, moi obligé n'importe qui façon, moi besoin reste carême pour mourir, moi besoin reste dans sa façon là. Ça veut dire qu'on peut faire une façon amène ou même dans une Bonne direction. bonne direction. D'accord. D'accord. C'est nous pouvons faire pour mourir pour coller, pour mourir pas pour coller, mais nous besoin dans la tête qui mourir pour pas pour d'accord, mourir pas content. D'accord. Si bon Dieu pas content, qui nous fait quelque chose qu'on l'envers. Mhm. Mhm. Ça veut dire que nous pouvons bhakti là, et à travers ça, si nous avons, c'est Baya Bhakti, nous parlons Covid, nous besoin lever la main comme ça avec bon Dieu. Mais un respect nous montrer avec bon Dieu, c'est un grand du monde nous venir et un grand du monde peut passer nous dire Vanakam. C'est Muruga nous dire Om Saravana Bhavaya. Ça veut dire nous lèvons nous la main, ça veut dire nous montrer nous bhakti. Si nous disons Saravana Bhavaya, il n'est pas pour bon. Mhm. Mhm. Mais dans ça respect. paye ce respect-là qui fait vous verser la tête, dire Om Saravana Bhavaya Namaha, Om Murugane Potri, n'importe qui façon nous fait ça veut dire ça une façon où amène ou bhakti, mais à travers ça avec paix, c'est le bout du bout de les temps. Alors, rapidement, Steven, donc, quand nous pécons de respect dans la prière envers le Dieu Muruga Peruman, la société finit d'évoluer aujourd'hui. Nous retrouvons avec une jeune génération qui croyant, mais est-ce qu'ils ont vraiment inacquérir toute sa connaissance, comment son ami Devakumal peut dire nous là, pour la suite? Donc, comment s'annonce la suite quand nous pécons de la jeunesse mauricienne, la jeunesse tamoule, comment s'annonce la suite? Bon. Nous pas là pour faire un jugement, définitivement. Oui, nous pas pour faire jugement, mais comment nous dire tous les temps que l'éducation elle commence dans la case. Mhm. Alors, comment Swami même fait causer une dire que nous ban grandi nous montre nous qui de vendredi nous besoin rester carême. Voilà, moi tu peux venir là. Comme Oui. écoute Swami causer, moi dis c'est le place, enfin pas c'est le place. Comment on dit à la maison, l'éducation commence à la maison. À la maison. Mais ça, l'éducation spirituelle, là, il fait aussi dans Mancourville. Il fait Il y a aussi pas dans autant qu'il y a Mancourville. dans Courville. C'est exactement ce qui, même comme le grand poète Bardiar dit, Koil talamanitum palli seiguvo. Mm. Nous sommes capables de convertir tout le ban Courville Un lieu d'enseignement. un lieu d'enseignement. Mm. Alors, nous pas dit ça le Courville pour, bon, dans le Courville, dans le Getsami, nous faisons la prière, mais en même temps, nous avons gagné l'enseignement dans Courville. Nous acquérir une connaissance quand nous C'est rencontrons ça. nous partageons avec les autres. C'est ça. Ça qui est important. Ça qui est très important. D'accord. Alors, à cause de ça, nous fait de sorte que nous amenons les enfants à Courville. Mhm. Parce que faut des enfants qui fréquentent Courville pour réussir à gagner ce savoir-là. D'accord.
Parce que c'est un flambeau qui nous besoin sortir. Alors, il n'est pas besoin fini, il n'est pas besoin teindre avec une seule génération. Aujourd'hui, nous là, demain, nous pas pour là. Mais c'est future génération qui besoin continuer sortir sa flambeau-là. D'accord. Alors, quand vous pouvez le savoir, c'est qu'il faut des autres venir Corville. À cause de ça, l'appel, c'est à tous les jeunes qui nous sont à travers l'île. Vous êtes besoin fréquente Corville pour vous gagner le comment Swami fait dire qui fait nous peut faire ça. Mais quand nous pouvons apprendre, c'est nous besoin une Corville pour nous connaître. D'accord. Alors, plus d'implication de la part des jeunes. Nous trouvons déjà hein, dans Vancouver quand nous allons, maintenant, on peut faire une décoration, surtout en ce moment, Toranam, hein, peut décorer plateau avec flair. Aujourd'hui, quand nous guettons les jeunes, nous développons beaucoup d'idées. Hein, servir faire coco, pour faire décoration, servir flair, pour faire langaram. Donc, vraiment extraordinaire. Beaucoup de gens sont impressionnés par tout cela, mais c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui peut faire l'idée. Les jeunes, vraiment, je ne peux pas dire qu'ils sont jeunes, je compte avec une Corville. Parce que, comme vous faites dire, je viens de faire Toranam. Et là, dernièrement, nous trouvons une nouvelle décoration qui se peut faire avec Tenangurutu, avec les Kia Coco. Et aussi, nous trouvons beaucoup de jeunes qui comptent en tapou. Alors, tout ça, tout ça, ces affaires-là, c'est ça qui attire les jeunes vers Corville. Alors, nous besoin toujours encourager les gens pour participer dans ce type d'activité-là. D'accord. Alors, Swami, dans Corville, les jeunes présents ou passent un message, souvent, comment ça passe? Oui, presque une grande location. Il nous donne une explication de conseil qu'il nous fait dans la prière qu'il nous fait dans Corville. Une explication parce que aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre beaucoup de temps et aussi il y a beaucoup de choses, il y a une leçon, l'éducation, alors nous faisons un petit temps, un petit moment, nous pouvons donner une petite explication sur la prière finie dans Corville. OK. Alors, nous pécons de nos enfants, nous pécons de la jeunesse, donc Murga Peruman, quand nous guettons, ou à l'internet ou à Tap Murga, vous trouvez dans une faux mes enfants, n'est-ce pas? Hein? Ça même qui nous appelle Bala Murugan. Bala Murugan, un visage innocent qui vraiment fait nous une applis en bout, fait nous une applis bhakti encore quand nous guettons dans sa forme-là. Ama Sylvie Ramasomi, quand nous pécons de Bala Murugan, donc qui les représente exactement, qui l'histoire est là derrière Bala Murugan? Alors, l'histoire qui est là derrière Bala Murugan, Murugan qui est représenté comme un enfant, là, le Bala Murugan, plutôt que Shiva, il amène Murugan sur la terre pour montrer nous qu'il y a beaucoup, pareil comme pour combattre le Sura Batman. Le démon Sura Batman, un Asuran, il amène là pour les capable de combattre. Alors, pour lui amener Muruga, depuis de ce netchikan, depuis de ce liché, troisième œil, et là, il sorti depuis un feu. Feu, c'est Shakti. Alors, Shiva et Shakti, ensemble, ils amènent Muruga. Que ça va étincelle là, il tombe de Saravana Poigei. Et là, là-bas, il y a un Kartigay Pen qui trouve ça six étincelles de feu qui ne sortait pas dans sa deux-là par Ganga Devi. Et là, il y a un moment où ça s'appelle Gangayen. Ça veut dire qu'il ne sortait pas Ganga Devi comme un enfant. Ça va étincelle là. Et là, il de Saravana Poike grandit par un Kartigay Pen. Et là, on appelle les Kartigayen comme encore représenté comme un enfant. Et Kaudia, Murugan, Kartigayen, Kugan, tout ça, c'est l'enfant comme si la beauté, l'intelligence, c'est tout de Shiva et Shakti. Et dans même un moment que je dis, Sat Chidanandam, Sat Chit Anandam, Sat Shiva Shakti Anandam. Que tu as Sat Shiva et Anandam, ça veut dire Shakti, Shiva et bliss et happiness. Alors, Muruga y amène un pirinbam. Que l'inné de Saravana Poigé, nous appelle Saravanan. Et Saravanan, là, nous appelle Saravana Bhava Om, il sorti de sa même grand mantra qui nous est capable de prononcer pour épargner le mal, pour capable de combattre le mal. Et
Om Saravana Bhavaya Namaha, que ben a servi ce mot-là parce qu'il est puissant. Et là, ça siste Muruga là, les soins de N, divine N, Muruga qui Kanden. Et là encore, nous retrouvons Kanden as Muruga même, Murugan, beauty, intelligence. Ça veut dire l'énergie de Shiva et Shakti. Et là, nous trouvons qu'il lit comme l'énergie du Kavina là, pour lui combattre le mal. Et le mal, les vrais que Shiva il amène comme pour combattre le Sura Batman. Mais quand nous mettons dans la vie de tous les jours, Sura Batman, c'est ça une mauvaise quitteuse qui peut arriver nous dans la société de tous les jours, que ça une mauvaise quitteuse comme la jalousie, la méchanceté, la colère, les désirs qui nous besoin couper, l'attachement, détachement avec ça man désir, et surtout le innatural. Innatural, ça veut dire un mot qui nous pas besoin de dire, ça fait blessant. Alors c'est ça, comme si c'est ça, Asuran qui nous peut venir, qui Muruga peut venir combattre là. Nous nous trouvons de nos jours comme ça plutôt. Tout cela, en quelque sorte, il résume sa carême, sa viradam qui nous restait pour voilà. Muruga Perumal là, n'est-ce pas? Alors, nous pécose l'histoire, les temps fait défaut, les temps passent très vite. Nous revenons le Taipo Sam Kavadi, année Steven Narina Pile. Donc, dis-nous le Taipo Sam Kavadi, comment les relier avec l'histoire autour de Muruga Perumal? Alors, je prends depuis que Ama Sylvie fait causer pour combattre Asuran, le démon, Sura Batman. Et c'est le jour de Taipusam que Umayamei, ça veut dire Ama de Murugan. Il donne lui sa veille là pour y combattre sa Asuran. Alors, démon là, comment nous dire, c'est comment Ama fait dire, ils font partie de nous la vie tous les jours là. Et les mêmes dans nous. Et comment nous dire, dans Tamil, il y a Mum Malangal. Il y a trois choses qui sont mauvaises, ça veut dire les impurs. On appelle les Anavam, Kanmam et Mayei. Alors, nous avons l'arrogance et aussi nous avons Kanmam, c'est ce qu'on appelle nous action. Et Mayei, tout le monde qui est illusion. Tout ça là, ils font partie de la vie. Et ça veille là, ces trois choses là, nous ne sommes pas capables de détruire. Quand nous remontons vers l'histoire, quand nous pouvons trouver, Murugan, il n'est pas un tueur démon là, mais il contrôle plutôt. Il contrôle que Murugan, il y a encore des démons là, il y a encore avec Murugan. Mais seulement, les un disciple de Murugan, il est en forme de sa Mayil Loki Murugan, il est assisé, ça veut dire Mayil Sovaganam. Et aussi, il y a Kodi, d'accord, le Seval Kodi, comment nous dire. Alors, ça veut dire que Murugan, il réussit contrôle sa mauvais qui est là, sa trois quiteuses qui m'ont dit là. Alors, pareil, c'est ça l'idée derrière le viradam, le carême qui nous restait. Quand nous reste carême, nous trouvons beaucoup de gens qui disent nous ne pouvons pas faire telles affaires, nous ne pouvons pas cause brite, nous pensons que bon quitteuse, il y a beaucoup de restrictions. Alors, ce qui fait nous avons ces restrictions-là pour nous capables de contrôler ce mauvais qui est là, ce démon qui est là dans nous et autour de nous là, nous sommes capables de contrôler. C'est ça l'idée un petit peu derrière, quand nous regardons l'histoire et aussi la pratique qui nous est là. Alors, c'est ça l'idée un petit peu derrière tout ça. Swami, donc, en Esteban, une cause, trois quiteuses qui relient à Muruga Perumal. Il y a le Maïl, qui est Vaganam, ce moyen de transport. Il y a le Seval, qui nous trouvait le Bankodi, qui représente la victoire de Muruga Perumal sur Asuran, comment nous dire. Et après, il y a Sovel, qui nous prier avec un bout pareil comme nous prions Muruga Perumal, qui est associé à lui. Donc, ces trois quiteuses-là, qui sont l'importance, justement, pour Muruga Perumal? Et Murugan, comment nous dire, Murugan, nous lesquels nous sont formes comment il était, nous finissons comme Jan Mail, et Sevel, et Sovel. Ça trois là même. Comment nous pensons, nous trouvons ça? Nous finissons tout ça. C'est ça trois quelque chose ensemble avec Muruga, comment Aya peut expliquer, Sura Batman, Muruga Perumal transforme li, majal sens li. Et samharam nin fait, comment nin fait nin pan tui li ou destroy li, nin destroy so arrogant.
il transforme lui dans l'autre façon. Mhm. Et tout le monde nous a kuma anavam maye kanmam satwa malam qui nous a là et nous besoin tirer à travers Shaktivel Mhm. et nom de Muruga et Shakti et so Muruga so vel nous capables tirer avec nous l'esprit avec nous le cœur. Mhm. Et sur le Batman aussi, il y a un côté mauvais, côté bon, tous les deux, il y a. Mhm. D'une façon, Muruga Perman transforme les dans deux. Un bon parti et un côté so mauvais. C'est mauvais, il vient comme un mile. Et so anavam c'est ego, il vient un mile. Il fait les restes en bas sur les pieds, comme ça, jamais anavam, ça ego, pas mot là-haut. Pas pour dominer. Pas pour dominer. Mhm. À cause ça, il vient d'une forme de mail, Muruga assiste loli, Mhm. qui comme ça, en avant, ça ego là, pas sorti, pas D'accord. dominé. Mhm. Ce côté bon, une victoire, il vient dans forme séval, il vient un pavillon. Ça veut dire, il vient un codi, il reste là-bas Muruga. Ce symbole de Ce victoire. symbole de victoire. Mhm. Ce bon façon, ce bon côté, Mhm. il vient là-bas Muruga Peruman. Ça veut dire, il vient dans une façon codi. C'est Maïl avec Séval, il vient à travers Sura Batman. D'accord. Mais ça, il séparé et à travers Shaktivel. Shaktivel nous dit Shaktivel, nous sommes capables de dire Gnanavel, Vetrivel. Il y a plusieurs noms pour Shaktivel. C'est Shakti d'une forme Parvati Devi. Il y a une partie de Parvati Devi, il y a une Shakti, il y a une Muruga Peruman de Solame. Donc, quand nous guettons l'histoire aussi, l'Idiao comme ça, qui est sur la Padman, fin transformé en un pied. Oui. Muruga Peruman, il avait ce veil, il transperce sa pied là, une fan niandé. La moitié vient sur Varanam, l'autre moitié vient sur Kodi, c'est-à-dire Seval. Donc, l'histoire, il y a beaucoup de quitteuses encore. Si nous allons fouiller, nous pourrons trouver beaucoup de quitteuses. Moi, surtout, mon conseil aux jeunes, il y a beaucoup de livres qui racontent nous justement l'histoire autour de Muruga Peruman. Nous besoin aller à le bouquiner, à le renseigner pour nous vraiment acquérir toute sa connaissance-là qui peut servir nous après aussi la transmission de sa savoir-là pour continuer de génération en génération. Malheureusement, aujourd'hui, donc, nous plateau peut prendre fin ici. Nous ne causons donc le Taipo Sam Kavadi, nous ne causons le Muruga Peruman, donc à l'occasion justement du Taipo Sam Kavadi qui peut célébrer ce samedi, le 4 février. Donc, je profite de l'occasion pour dire que Mikanandri pour cette présence sur le plateau aujourd'hui. Le Swami Devakumar, donc prêtre officiant au Arumigo Amatuke Tirukovi la Kandiab. Également Amma Selvi Ramasomi, donc qui est prof de Tamoul, qui pour continuer aussi partage sa connaissance qu'il y a là avec mes enfants dans l'école. Oui. Moi aussi, qui peut des appels faire pour continuer à faire li. Et aussi, c'est Steven Narayana Pillay, donc le vice chairperson du Tamil Speaking Union. Merci beaucoup pour cette présence sur ce plateau-là. Nous profitons de l'occasion également pour remercier donc la MTTF pour sa collaboration, pour qu'ils nous capables de mettre sa émission en place, pour qu'ils nous partagent la connaissance justement avec eux. Pas oublier, rendez-vous donc à l'occasion du Taipo Sam Kavadi ce samedi à partir de 6 h le matin. Vous pouvez capable comment suivre un programme donc un direct qui nous peut donc à la télévision de 6 h le matin jusqu'à 21 h le soir. Donc, je pourrais une émission spéciale à l'occasion du Taipo Sam Kavadi, un chant dévotionnel pour le Dieu Muruga Peruman. Donc, tout ça là, je peux capable suivre le Tamil Channel, chaîne 14 de la MBC. Merci encore une fois donc à vous, chers invités, pour votre présence. Nous dire peut-être à une prochaine fois pour une autre discussion autour donc de la culture tamoul, la religion tamoul. D'ici là, mo diezut Nandri, Vanakkam et Vetrivel Muruganuku Arogara. Muruga, 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 Muruga. ஆறுமுக மாறுமுக 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 ஆறுமுக மாறுமுகம் என்று போதி ஆறுமுக மாறுமுக மாறுமுக
ஆகமணி மாதவர்கள் பாதமலர் சூடும் அடியார்கள் பதமே துணையதென்று நாளும் ஆகமணி மாதவர்கள் பாதமலர் சூடும் அடியார்கள்